नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हम प्रोजेक्ट किस में बनाएं। सीएसई स्टूडेंट के दो टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं, एक होता है माइनर प्रोजेक्ट और दूसरा होता है मेजर प्रोजेक्ट इन देयर फाइनल ईयर। तो आज हम बात करेंगे माइनर प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं कि हम क्या बनाएं या फिर आजकल करंटली ट्रेंड में क्या है, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 प्रोजेक्ट आइडियाज बताऊंगी जो आप एज ए माइनर प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको टेक्नोलॉजीज भी बताऊंगी जिसमें वो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट इज टास्क रिमाइंडर एप्लीकेशन या फिर टास्क शेड्यूलर। ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली दिस इज ए मोबाइल ऐप विच यू कैन डेवलप इन जावा, कोटलिन, फ्लटर या फिर iOS. If you are developing this app for iPhone, then you have to develop this in iOS. Otherwise, you can develop this in React Native, or you can also develop this in Flutter. जो आप Flutter में develop करते हैं वो Android systems पे भी रन हो जाती हैं और iPhone पे भी रन हो जाती हैं. So it's better to prefer Flutter. इस ऐप में बेसिकली ये होगा कि टास्क रिमाइंडर, यूजर अपने टास्क उसमें ऐड कर देगा और उसके रिमाइंडर भी सेट किए जा सकते होंगे. So you can choose this as your project. The first one is task scheduler. The second minor project is temperature converter, in which you can convert temperature from Celsius to Fahrenheit and vice versa, and in other units also. And this is a very simple project and it can be developed in HTML, CSS and JavaScript. It's a very simple project. BCA students can develop this project. The next project is advanced calculator, means you can develop a scientific calculator app. Although this app is already available in mobile phones also, but you can develop this in order to add more functionality, or you can develop more functions which are not available in existing calculators. So you can develop this calculator which can be programmable calculator or scientific one with more advanced features. And this can be developed in Java for Android, iOS for iPhones, Flutter for both the platforms, and Python for desktop applications. So this is also one of the very important project, that is an advanced calculator. The next project is quiz or flashcard app. This is a very interesting project in which you can add many kinds of questions based on the subjects of your interest. It can be either computer science subjects or general knowledge subject or current affairs or any other stream of your choice. You can add questions of that kind in that project, and there will be points for every answered question. It can also include IQ test, etc. So this is a very interesting project. Either you can develop a desktop application for that or a web app or a mobile app for that. इसके लिए आपको you can develop this in, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो फ्लटर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, पाइथन यूज करके और रिएक्ट यूज करके इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन इसकी बना सकते हैं. The next one is also very interesting, that is expense tracking app, in which you can track the expenses which are being done in a month or year or 6 month expenses. आप पूरा उसमें बजट प्लान, फाइनेंस प्लान करके इसकी ट्रैकिंग की ऐप डेवलप कर सकते हो. दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट और ये आपके टीचर्स को भी काफी पसंद आएगा, जिसमें आप अपना पूरा एक्सपेंस ट्रैकिंग करके उनको शो कर सकते हो कि आपके डेली एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उसमें ऐड करें डेट वाइज, मंथ वाइज एक्सेट्रा, आप उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो. तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप. और इसको भी अगर आप ऐप डेवलप करते हो तो फ्लटर में कर सकते हो. अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है देन यू कैन गो फॉर PHP और पाइथन, और अगर आपने वेब ऐप बनानी है यू कैन गो फॉर रिएक्ट एंड Node.js. द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर. This is a very common but very important project. In this project, you can add marks of the students and based on that, you can compute their grades. आप एक क्लास के पूरे डेटा को भी इसमें ऐड करने की फंक्शनैलिटी डालिए, बाद में उनके ग्रेड्स कंप्यूट करिए, एंड देन यू कैन डू देयर रैंकिंग ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड देयर अटेंडेंस एज वेल, एंड देन जनरेट द रिपोर्ट्स ऑल्सो. So this is also very significant project, that is student grade calculator, and or you can say that mini student management
सिस्टम। और इसको आप बना सकते हो PHP में, जावास्क्रिप्ट में, या फिर यू कैन यूज एंगुलर JS, Node.js या फिर React। जो भी टेक्नोलॉजी आपको इनमें से आती हो, यू कैन डेवलप दिस प्रोजेक्ट इन दैट। जो मैंने पहले भी एक प्रोजेक्ट आपको बताया था, टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप। You can also develop unit converter. You can include unit converter and temperature converter also, in which you can convert one unit into another. जैसे कि हम गूगल में सर्च करते हैं, if I want to convert centimeter into millimeter और centimeter into inches, तो कितनी जल्दी उसका रिजल्ट आता है। But you can develop your own app of unit conversion. So this is also very interesting and important project, and we need it direly. Sometimes it is very important to convert from one unit to another. So this is also one of the important project, and you can develop this in HTML, CSS and JavaScript. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल टेक्नोलॉजीज भी सीखने की जरूरत नहीं है. It can be simply developed in HTML, CSS and JavaScript. The next one is simple weather forecasting app, in which you need to call an API, जिसके थ्रू आपकी ऐप आपको दिखा देगी कि करंट टेम्परेचर क्या है. You can develop it to show temperature hourly, on hourly basis, on day basis, weekly basis and monthly basis, etc. And you can also add various locations कि अगर हमने किसी और लोकेशन का टेम्परेचर या वेदर चेक करना हो तो वो भी फंक्शनैलिटी इसमें आप ऐड कर सकते हो. तो इसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होगी, HTML, CSS and JavaScript. And you can also call APIs like Open Weather App. तो ये वाला API यूज करके भी आप ये ऐप डेवलप कर सकते हैं बहुत इजी. द नेक्स्ट वन इज रेसिपी ऑर्गेनाइजर ऐप. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि आजकल बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. तो आपकी ऐप में ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग टाइप्स की डाइट, लाइक वेजिटेरियन रेसिपीज, नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज, कीटो डाइट रेसिपीज, recipes for people with more weight, recipes for people with less weight और healthy diets, etc. तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइजर ऐप बनाइए जिसमें अलग अलग काइंड्स ऑफ रेसिपीज ऑर्गेनाइज करके रखी जा सके. So this is one of the very significant project, and this can be developed using CSS, JavaScript, Python, etc. तो इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग सीखने की जरूरत नहीं है. द नेक्स्ट वन इज बेसिक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट, बिकॉज आजकल ब्लॉग्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं. अगर ये आपका अच्छा प्रोजेक्ट बन जाए तो आप इसको लाइव लॉन्च भी कर सकते हो. तो ब्लॉगिंग में आप ऐसी फंक्शनलिटी डाल सकते हैं जिसमें यूजर हैज टू एंटर हिज पोस्ट, द टाइटल ऑफ द पोस्ट एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर रीडिंग दैट पोस्ट. तो आप इस तरह की फंक्शनैलिटी वाला प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग वाला. And this is also very simple to develop this project by using PHP, JavaScript, HTML and CSS. So you can develop the blogging platform by using these technology. तो ये थे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स. आई होप ये आपको पसंद आए होंगे. ये जो टेक्नोलॉजीज हैं आप कहाँ से सीख सकते हैं, ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. And these are very simple and comes under the category of minor projects. If you need any kind of help and support regarding this, then you can drop a message in the comment box. Thank you friends. Thank you so much.